So, hello everyone. I hope you all enjoyed the experience of the BITSAT Open test, and huge claps for everyone who gave the test irrespective of their preparation. So, the agenda of this video is to tell you what actually happened in the paper. जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तब हम सोच नहीं पाते हैं कि क्या हो गया सर. कई क्वेश्चंस बहुत weird हमें मिलते हैं. And in this video, we are going to give you the in-depth analysis of the BITSAT Open test and what all learnings we can take from the paper. I have Kushal with me. Kushal will be part of this video. He will also tell us more how the paper was designed and why the Phodu Club test series is one of the most relevant in the market for BITSAT. कुशल बच्चों का बहुत थॉट आया कि सर पेपर तो इजी लग रहा था, बट व्हेन दे सॉ द फाइनल स्कोर ऑन द स्क्रीन दैट ब्रोक देयर हार्ट. एक तो बिटसाइट इंस्टेंटली स्कोर फ्लैश कर देता है लाइक वी डिड इन दिस मॉक. Exactly. So the questions in BITSAT appear to be easy, but students are not able to solve them because they are from some parts of the chapter जिसको students generally ignore करते हैं for JEE. There are a lot of questions that are there from deleted chapters of JEE. यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं. Plus there are specific questions as well जो BITSAT कई बार पूछ लेता है, because of which students get stuck. In short, this paper was one of the replicas of the past BITSAT ka paper. That's what I can tell you, and we will understand that ahead in the video. Okay, so overall this paper must have opened eyes for most of the students जो BITSAT को थोड़ा lightly ले रहे थे कि that yes sir questions तो BITSAT के easy होते हैं, but when it comes to 130 questions there are diverse concepts that are tested and same thing we try to do in this paper जहाँ पे same concept के question repeat ही नहीं हो रहे थे. There were from one chapter, if there are 4 or 3 questions, multiple concepts were tested and it was more biased towards theoretical side and many weird questions as Kushal said. जैसे octopus के blood का color पूछ लिया, the same way BITSAT do. हमने भी वही feel आपको देने की कोशिश की बच्चों. We keep on saying about English and logical reasoning and importance of English and logical reasoning, and after today's BITSAT Open, I guess a lot of students must have actually realized how important English and logical reasoning is. Okay. Right. From last few years, the level of English and logical reasoning भी थोड़ा सा बढ़ा है in BITSAT. Especially lengthy हो गया है, if I were to be precise. Especially the reading comprehensions. जैसे कि BITSAT Open में both reading comprehensions were pretty lengthy. So last year भी ऐसा हुआ था. That is why we have given that particular experience to you. And other than that, pretty much standard coding, decoding, number series, statement and conclusions, this type के questions आते हैं, which we are giving you on a daily basis in the free daily practice in our English LR का crash course. So I'm sure जितने भी बच्चों ने उन चीजों को ढंग से follow किया है अभी तक, they would have pretty nicely gone through this section and काफी ज़्यादा boost मिला होगा इस section से उनको ultimately. And let's go to the in-depth analysis of each subject. So फिजिक्स में क्या था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे वेयर डेप्थ वाज रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं था दैट यूजिंग जस्ट द सरफेस लेवल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज आप क्वेश्चन को कर लोगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. न्यूमेरिकल्स वर नॉट देयर. इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिकल्स वेरिएबल्स वर गिवन. तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है. द कैलकुलेशन विल नॉट कंज्यूम योर टाइम, but to understand the situation it will take time. So we suggest please instantly leave such questions in the paper. बहुत सारे बच्चे stuck हो गए होंगे and they lost their momentum in physics due to this. So other than that, in chemistry सबसे ज्यादा surprises जो BITSAT देता है that is in chemistry. Sometimes it is inorganic heavy, sometimes you will see it is physical heavy. So anything can happen in BITSAT. And when I say physical heavy, वो 2-3 question का difference नहीं होता. Sometimes it is a difference of almost 10 questions as well. बहुत significant difference create हो जाता है उस कारण. And many fact based questions are asked. Repeatedly हमें जो remove chapters हैं उनके question पूछे जाते हैं. Polymers, P block, metallurgy, chemistry in everyday life. We ignore these chapters, but फ्री के मार्क्स बनते हैं हमारे यहाँ से. बट एक बार अगर आप मल्टीपल मॉक्स में यू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस, देन इट विल बिकम डूएबल फॉर यू. आई रिमेंबर कुशल, वी यूज्ड टू गिव सच क्वेश्चंस इन आवर Phodu Club mocks as well. Definitely, through Phodu Club mocks, this was just one of the
replicas or one of the experience which student had today, but जो भी बच्चे are giving the test series on a regular basis from Phodu Club, they know that every mock test is different. ठीक है, every mock test has different kind of questions, different weightage, different difficulty. So that is very important to like familiarize yourself with all kind of exam conditions and all kinds of paper patterns which have been asked till date in BITSAT, and practice all of those patterns so that you are ultimately ready when you go and give the final BITSAT paper. The agenda of today's BITSAT Open was not कि हम questions predict कर दें, ये class 10th का board exam तो नहीं चल रहा, right? So but the agenda was कि यार to give you an experience like BITSAT, कि यार ऐसा हो सकता है, don't have any thing in your head कि BITSAT ऐसा ही होगा, anything can happen, right? That was the major goal and the motive of BITSAT Open. So now coming to maths. See, maths में calculations are there definitely, but I feel in BITSAT many questions can be solved with help of options that students missed. कई जगह n की वैल्यू लेके क्वेश्चन हो जाता, कहीं पे you could have just directly substituted the given values in the option and could have solved. Such things were required to gain momentum and like take an edge over the students who are using the normal methods that are given in books. Other than that, many students ignore chapters like LPP, mathematical reasoning, conic section for BITSAT. These are predominantly asked, and इस मॉक में भी हमने आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जो कि हैं. So कुशल, आप सजेस्ट कर सकते हो बच्चों को like for these removed chapters how they can prepare. Now they got the reality check कि हाँ भाई इसके बिना होने वाला नहीं है. The first way is a lengthy way here, you go and read the NCERT and all of that, but honestly not much time is left. So the best thing would be here, you see and watch whatever resource you have. What I'll recommend is here Phodu Club के crash course में there are very crisp lectures and of these deleted topics, जितना required है उतना ही पढ़ाया गया है. So you can quickly watch them and cover them if you are in the crash course, and if you are planning to join the crash course for the second attempt, you can actually cover all of these deleted topics from the crash course, solve the DPP's chapter wise test, and be ultimately ready for BITSAT. डेफिनेटली चेक आउट आवर क्रैश कोर्स. बहुत एफर्ट किया है यार, बहुत कम टाइम में आप कवर कर पाओगे. And for English and LR as well, many students are finding the resources. We are also offering English and LR in our crash course, so definitely वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी. And as Kushal said, English में long reading comprehensions take a lot of time, and वैसे CBSE जैसा नहीं है that you will find the exact line in the paragraph. You have to make some deduction from the paragraph. That is going to be the answer. And logical reasoning. We conducted a session earlier with our students of crash course on number series and all the LR problems. That is when the students realized कि सर पैटर्न तो बहुत ही सारे बन सकते हैं, एंड कभी अगर हमने पैटर्न ही नहीं देखा, प्राइम नंबर वाला, डिजिट्स वाला पैटर्न, then we will not be able to instantly think in the paper, and that is where the students were losing marks. आप डेफिनेटली हमारी मेंटरिंग वीडियोस भी देख सकते हो जहां पे हमने एलआर के लिए आपको और भी पढ़ाया है बाय हेल्प ऑफ टफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द BITSAT Open as well. So exactly, like as you talked about improving speed is very important in maths. We have been taking problem solving sessions regularly to deal with this thing. Even if you are, let's say, not prepared well for a particular chapter, let's say conic section week है, बस उसका problem solving session ही attend कर लोगे ना, you will be filled with so much confidence कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं approach कर सकता हूँ. All of those things really help students. now coming to the unit wise analysis, please see इससे mislead नहीं होगा कोई भी बच्चा. If there are more questions of electromagnetism and mechanics 1 in this paper, there will be some shift where the weightage of modern physics will be more. So anything can happen. So इस पे रिलाई नहीं करना है कि यही आएगा. डेफिनेटली हम बार बार बोल रहे हैं, दिस इज जस्ट रिहर्सल फॉर यू. नाउ कमिंग टू द रिमूव चैप्टर्स, वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई अगर इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रिमूव चैप्टर से, there are how many questions? 28 questions are from the removed chapters and you are losing that. तो this is the time कि भाई हम अगले 4-5 दिन में भी कवर कर सकते हैं इन चैप्टर्स को by using the crisp videos. So
And before we end this video, we have done something good for the students. I have handpicked some questions that I want to showcase to the students जो test नहीं भी दे पाए हैं and they are still watching the video. कि what type of questions they can expect in the BITSAT type exam. Like we gave 3 questions of LPP. 2 questions are in front of you. एक तो हमने दे दिया calculation based questions. Many students are comfortable in this thing. But when it comes to the theoretical questions, that is where students lose marks. इसके लिए भी वीडियो है, ये भी कवर कर सकते हो हमारे साथ. अब पता ही नहीं चलेगा अदरवाइज आपको what is simplex method, what is primal problem, तो it will be a problem for you. और देखो अब ये क्वेश्चंस है, इनको देखते ही many students will start solving in the generic ways. But यार ऑप्शन चेक करो ना, -1 पुट करके चेक करते हैं, 2 पुट करके चेक करते हैं, is that satisfying? My question will be over. In this question, just take the value of n, your question will be over. That is how in a smart way you have to solve in the paper. और देखो मैथ्स में, अब बच्चों को लगा होगा अरे सर ये क्या आपने irrelevant क्वेश्चन दे दिया, spherical coordinates. अरे भाई यही तो सरप्राइज था बिटसेट का लास्ट ईयर. दे आस्क्ड one question in multiple shifts from the spherical coordinates. यही तो आपके साथ और इंस्टीट्यूट कोई करेगा नहीं जो हम लोग आपको अलग अलग हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कराना चाहते थे. नाउ इफ वी गो टू द फिजिक्स, हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकली हैवी था, चलो प्रूव करते हैं बच्चों को. अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इट इज रिमूव फ्रॉम द मेन सिलेबस, बट अगर आप इसके क्वेश्चंस कभी देखे ही नहीं होंगे तो यू आर लूजिंग फ्री के 3 नंबर. आफ्टर दिस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ब्लू ग्लास को हीट किया, कलर चेंज हो गया. you may know the concept, but अगर वो recall नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में instantly and you are losing 1.5 minute on this question, then ये समझना पड़ेगा, ये this is the learning. Semiconductors, remove topics हैं. Rectifier is generally not asked in JEE mains, but we get questions in BITSAT. And in fact बहुत बच्चे assume करते हैं that काफी सारे टॉपिक्स मैग्नेटिज्म टाइप के भी बिटसेट में नहीं होंगे, बट दे आर आल्सो आस्क्ड इन बिटसेट. सो प्लीज 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 कवर कर लो. एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू. कलर कोडिंग का क्वेश्चन है बट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है. अगर याद है इनकी वैल्यूज तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. सिंपल है स्टोरी. सो एंड माय फेवरेट क्वेश्चंस आर इन केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में वियर्ड क्वेश्चंस वी गेट. अब पार्किंसंस डिसीज डोपामाइन से होता है, स्ट्रक्चर बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो कल को कुछ भी कंपाउंड लिख देंगे. यू डोंट नो दिस, इंस्टेंटली स्किप द क्वेश्चन. कुछ गेस करने की नीड नहीं है. कम बैक इन द राउंड 2 अकॉर्डिंग टू वो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट. अटेम्प्ट करो, नहीं तो छोड़ दो. रैंडम तुक्के नहीं मारने ऐसे क्वेश्चंस में. अब क्वेश्चन आया ऑक्टोपस ब्लड का, भाई कलर बताओ, तुक्का नहीं मारना है इस चीज में कि कुछ भी रैंडम गेस कर रहे हैं. दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रिकमेंडेड. एंड यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दीज क्वेश्चंस विदाउट गिविंग द मॉक्स. मॉक्स में ही आएंगे यार, अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं है कहीं पे कि ये पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द हाईलाइट ऑफ केमिस्ट्री. एंड वन मोर थिंग, बच्चों को ये भी शौक लगा होगा, अब जेई में नहीं आता बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बट हमारे पास जो 26 में शिफ्ट 1 में ही फीडबैक आया था, दैट वाज कि सर बाईसाइक्लो कंपाउंड का क्वेश्चन था. एंड वही हमने आपको देने की कोशिश की कि आप भी अवेयर हो जाओ, दिस कैन बी आस्क्ड. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट पीसीएम. एंड जो नंबर सीरीज एंड एलआर में नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनके जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बच्चों, वी विल बी कंडक्टिंग मोर सेशंस ऑन दीज सून. So you can definitely be part of the Phodu Club test series or crash course, and we will invite you to the LR sessions. अगर आप इन questions में अभी भी struggle कर रहे हो तो. Definitely. One thing which I want every one of you to realize is that every single question which is there in BITSAT Open or in the test series of Phodu Club is there for a reason. ऐसा नहीं कि यार बस हम 4 क्वेश्चन उठा के कहीं से ले आए और ऐसे ही डाल के दे दिया, राइट? एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज सम थॉट बिहाइंड इट कि उसको क्यों डाला गया है. ठीक है, प्रॉपर मैपिंग की जाती है एंड देन वी पुट द क्वेश्चंस देयर फॉर यू. वी डिजाइन द एक्सपीरियंस फॉर यू, जो कि एक्चुअली में बिटसैट में हो चुका है इन द प्रीवियस ईयर्स, राइट? सो आई होप बाय सीइंग ऑल दिस एनालिसिस इट्स प्रीटी क्लियर टू यू नाउ किस तरीके से पेपर डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से बिटसैट ओपन का पेपर बनाया गया है आप लोगों के लिए.
एंड क्यों ये बिटसैट को इतना ज्यादा रेप्लिकेट करता है. नाउ आई फील एवरी स्टूडेंट कहीं ना कहीं दे कैन फील यस द पेपर was डेफिनेटली लाइक बिटसैट जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है. सो एनी फाइनल थॉट्स यू वांट टू ऐड? सो बस बच्चों, जो भी आपका एक्सपीरियंस गया, वट एवर लर्निंग यू टुक, वट एवर यू डिड, वट एवर एनालिसिस यू डिड, आप वो जरूर हमें कमेंट करके बताओ. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी कंडक्टेड द बिटसैट ओपन. आप चाहते हो दैट वी कंडक्ट वन मोर एग्जाम बिफोर द बिटसैट सेशन 2? हम करेंगे, बट वी वांट योर फीडबैक. कैसा लगा, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? डू लेट अस नो. And definitely don't get demotivated if you have scored less. इसमें कम आ गए हैं तो लाइक इट्स एन वो ना कि भाई रियल पेपर में आई एम मच मोर प्रिपेयर्ड टू टैकल सच क्वेश्चंस एंड मैं आई कैन इंप्रूव माय स्ट्रेटजीज एटलीस्ट इन द एंड के डेज जहां से आई कैन एक्चुअली बूस्ट माय मार्क्स. सो या anything can happen on the final day. Again, BITSAT is very, very unpredictable. No one in this world can actually predict it, to be very, very honest. But what we can do is कि यार जो पहले आ चुका है, past में आ चुका है, we can prepare you according to that, and you can prepare according to that. All right, I hope you had a great experience in giving BITSAT Open, and I hope the analysis is pretty clear to you. All the very best, पढ़ते रहो and BITSAT को भी फोड़ के आना है.